Hello students, good afternoon everyone. Students, today in this video, I'm going to summarize chapter 1, disaster management in your unit 4. So this chapter already you have learned in your previous classes through some explanations. So now let us recall all the topics related to this chapter which we have covered in our previous classes. And students, this video is going to be a short क्योंकि इस वीडियो में आपको हाफ चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी एंड सेकेंड वीडियो में आपको उसका सेकेंड पार्ट मिलेगा. देयर आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर. ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज़ द डिज़ास्टर. सो स्टूडेंट्स, an event that cause huge loss of lives and property is called a disaster. Okay, means एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी दुर्घटना जिसके कारण क्या होता है, there is a huge loss of lives. मतलब एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं एंड अ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी लॉस ऑल्सो. सो दिस इज़ कॉल्ड द डिज़ास्टर. अब फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, इफ़ देयर इज़ अ डिस्ट्रक्शन ऑफ एन बिल्डिंग, एक बिल्डिंग अगर गिर जाती है देन क्या होता है, देयर इज़ अ लॉस ऑफ लाइफ्स. द वर्कर्स हु आर वर्किंग इनसाइड द बिल्डिंग वो उसमें दब जाएंगे. अब जो बिल्डिंग गिरेगी उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है तो प्रॉपर्टी का भी लॉस होगा. सो द लॉस ऑफ लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द disaster. Okay, and disaster can be either natural or man-made. Disasters two types के होते हैं, natural और man-made. Okay, so the disasters which are caused by the natural forces of nature, devastating earthquakes, floods, cyclones, droughts, volcanic eruptions and landslides, these are the examples of natural disasters. Means the changes in the nature which are cause a huge loss of lives and property, these are known as the natural disasters. While there are some human activities which add to the risk of natural disasters. मतलब human activities like हमारे कुछ ऐसे काम जिसके कारण कोई भी disaster या mishappening हो सकती है, that led to a disaster. Okay, so the disaster which are caused by the human activities are known as a man-made disaster. अभी जैसे आपने पढ़ा हुआ है डिफॉरेस्टेशन, एंड लास्ट चैप्टर में पढ़ा था देयर वाज अ इंसिडेंट ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी. सो देयर वाज अ लीक ऑफ अ मिथाइल आइसोसाइनेट गैस which led a huge loss of lives just because that gas leaked at midnight. So many people they had lost their lives just because they were not able to come outside and ran away from their habitations. Okay, and the activities like deforestation, burning of fossil fuels, these also contribute the global warming, and global warming leads many disease and many disasters. Okay, and continental global warming is rise due to the melt of the large amount of polar ice. जैसे कि पोल्स में जो आइस है, जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा, जिससे जो आइस होती है, ग्लेशियर्स होते हैं, वो मेल्ट होते हैं. अब जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे देन क्या होगा, इट लीड्स टू फ्लड होगी कोस्टल एरियाज़ में, जिससे क्या होगा, जो सी लेवल है वो बढ़ेगा. इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसेस द रेनफॉल विच कॉज अ ड्रॉट. जब रेनफॉल नहीं होगी तो क्या होगा, ड्रॉट होगा. ड्रॉट होगा देन क्या होगा, देन देयर मे बी नो क्रॉप्स, नो वेजिटेशंस. अब वेजिटेशन खाने को नहीं होगा, क्रॉप कल्टीवेशन नहीं होगा, देन क्या होगा, वी couldn't survive. Then it also increases soil erosion, it increases the risk of landslide, human errors, negligence and malnutrition and malfunctions of equipments. Deliberate the actions of man can lead to man-made disasters, train accidents, plane crashes, stampedes, fire in buildings, industrial and nuclear accidents, disasters resulting from acts of terrorism. These are examples of man-made disasters. Okay, जैसे कि बिल्डिंग्स में आग लग जाना, ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं, प्लेन क्रैशेस होते हैं, इंडस्ट्रियल या न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, और जो आपको पता होगा अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा पर न्यूक्लियर अटैक किया था वो. सो दीज टाइप ऑफ इंसिडेंट्स लीड टू द man-made disasters. ठीक है, disasters bring great suffering in their wake through events such as cyclones that can be anticipated. अब जो
disasters हैं, it leads to the heavy loss of lives and also increases the chances of diseases. अब जैसे कि फ्लड है, सुनामी आ जाती है, फ्लड होता है, बिल्डिंग डिस्ट्रक्शन होता है, इससे बहुत सारी डिसीजेस भी स्प्रेड होती हैं जस्ट बिकॉज दिस लीड टू द चेंजेस इन द एटमोसफेयर. ओके, so these are some conditions where there are natural and the man-made disasters causes, and the socio-economic conditions plays a big role in the impact of disasters. Okay, next is hazard. So what do you mean by hazards? आपने पढ़ा हुआ है. Yes, so a condition that might lead to a disaster is a hazard. Means एक ऐसी condition, एक ऐसी situation, एक ऐसी चीज़ जिससे कि एक disaster होता है, ठीक है, दैट इज़ द हैज़ार्ड. ओके, उसको क्या कहा जाता है? हैज़ार्ड्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, रिवर इज़ अ हैज़ार्ड फॉर दोज लिविंग ऑन द बैंक्स बिकॉज इट कैन कॉज फ्लड. ठीक है, जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं या रिवर इन एरियाज़ में रहते हैं, रिवर के साइड वाले रीजन्स में, तो उनके लिए हैज़ार्ड क्या है? उनके लिए हैज़ार्ड है वो रिवर, क्योंकि रिवर में अगर ओवरफ्लो होगा वाटर का, देन क्या होगा? वो फ्लड में चेंज होगा. ओके, एंड if there is a factory in any settlement near to the settlements and it is producing poisonous chemicals which is disastrous for the consequences. So this factory is a hazard क्योंकि इस फैक्ट्री में ही वो केमिकल्स, वो गैसेस स्टोर की हुई हैं जिससे कि हैज़ार्ड्स हो सकते हैं. ओके, अर्थ मूवमेंट्स एंड द वेरियस वेदर फिनोमेनास, दीज आर मोस्ट कॉमन नेचुरल एजेंट्स which gives rise to the hazards. So there are two types of hazards, geological hazards and the weather associated hazards. So first one is a geological hazards like volcanic eruptions, earthquakes, landslides. These are called the geological hazards. Means the changes in the earth, the movement in the earth's interior, these are known as the geological hazards. Next is the weather associated hazard. So the hazards which are arise due to the weather phenomena such as pressure differences, heavy rainfall and less than usual rainfall, these are the weather associated hazards. Okay, and all human habitations, these are at less risk from the hazards of some kind of other. The chances of disasters occurring at a place depend on its location and surrounding. For instance, town in move or slip against each other, so this producing the vibrations in the earth's crust, the sudden shaking of the earth called the earthquake. So students, this is about the hazards, and in our next video they will discuss about the natural disasters and the man-made disasters. They will learn about earthquakes, volcanic eruptions, landslide, drought, floods, and the tropical cyclones. Okay, till you all should wait for the next video and watch this again and ask if there is any doubt, that thing which you didn't understood, then ask it to me. Okay, we'll meet in another video.